Our today's podcast guest is Kabir Rachure, who is a three times race across America finisher, which is like a 5,000-kilometer race one has to do within 12 days. And recently, he participated in a race called as Romantika Beas, which happens in India and which is like the toughest ultracyclist race in India. He became the first finisher of this race. This is the third edition which happened recently in March. In this podcast, he'll be talking about his experience of the race, his training plan. If a beginner wants to participate in this race, can he or she do it? And if you want to become an ultra cyclist, then what are the things that you have to do step by step? About recovery, how you can enhance your recovery, and finally, some questions asked by you all. So, without any further delay, let's get started. So, welcome Kabir bhai to the podcast. Thank you, Thank you for boss. accepting this invitation. Thanks. Yes. So, let's start with this Yeah. race. If I tell you, you can only tell us about this race, like what is this race about, where does it happen, what is the distance, elevation like. So, Uh, little so, bit info uh, about the race. yeah, so this race was around 700 kilometers with elevation gain of somewhere around 500 to 15,000 meters. And around 38 hours was given time. So that was the cutoff. But this is it starts in Hoshiarpur, goes to Manali, and then back from the same route to Hoshiarpur. So it's Hoshiarpur is at the border of like Himachal and Punjab. So climb starts from like Hoshiarpur. Usually Punjab is totally flat, but mostly climb starts from Hoshiarpur, and that road goes till Manali through that old highways and all. So it's pretty tough route. Lot of narrow roads, less traffic, super scenic. But yeah, this is how it was. How are the road conditions? Yeah, road conditions were too bad. Acha. For first 100 kilometers, it was pretty good. No issues at all. Then it starts getting bit bad because now Manali has a big highway, so mostly traffic goes from that route. So Hmm. the government does not, I don't know, maybe they are not properly managing these old roads as they used to manage like last, uh, maybe in past. And I saw in many patches there was like construction going on, new bridges they were making. So it was like mixed thing. Few patches were not managed properly, and there were like few patches where they were making new. So roads were pretty bad. There were like many landslides in past because before race happened, I think 1 week before race, it was raining super heavy. So lots of landslides were there, and then due to these things, the roads were like pretty bad. So super bad. So pretty bad is not justice to that condition. Roads were like too bad. ओके Yeah. जनरली इंस्पायर इंडिया के जो भी रेसेस है जैसे अल्ट्रा स्पाइस है डेक्कन उन सब के Yeah. रोड्स आर क्वाइट गुड लाइक वी हैव नहीं, सीन डेक्कन का भी तो बहुत डेक्कन घटिया होता है. Yeah, एंडिंग डेक्कन एंडिंग is में ना also शायद yeah, ending, but that is what matters. So हाँ in India, I think only Himalayan race is the one which gets good roads. Okay, वेरी मच because those roads are like managed by BRO, so they are like top notch. Hardly any patches are there which are not properly managed, but that also doesn't matter. But in Ultra Spice, we get a lot of bad patches because race goes through lots of states. And then again, yeah, the patches are bad. But yeah, if you ask me to rate bad roads in races, so Leh is like number one in good condition. Thereafter, I would say maybe Ultra Spice, ओके because roads are okay, good. ओके Then DC and then this Romantica. But yeah, we can't do anything. This is the condition. So yeah. and I saw the organizer's website.
So they are the Yeah, ones who are organizing Shivalik signature race also, right? correct. Yeah. Okay, great. And this was the third edition of This was the third Romantica. edition, yeah, of Romantica. Oh. So tell us a little bit about your preparation process for this race, because for other races, so you are very regular. This is first time you're preparing for this kind of race with so much Yeah, elevation. So what yeah, did you but do? at the end, it's all about pedaling. Yeah, so the thing which will take you forward is pedaling. You just have to pedal hard. So I just did a lot of But climbing training before the race. Okay, say like 10 weeks before I started doing some 12 weeks before the race, I started doing a lot of climbs. Maybe somewhere around 4 to 5,000 meters of elevation gain in a week. oh, So yeah, in a week. So that comes down to almost 20,000 meters of elevation gain in like 1 month. So in last, I decided, I guess, 2 months, 3 months back that I will do this race. When I spoke to Preeti, and then uske baad I started doing climbs. So I think in from January to March, like till now, I have already done 52,000 meters of elevation gain. So I think that is huge if we yeah. consider just the span of 3 months. So yeah, that is the only thing which I changed. But if you look at it as like this was my 20th supported race. Hmm. So when you do 20th supported race, you know everything how it goes, your crew knows everything, you know what it takes. So it was not something which I changed everything because this was a new race, because at the end the basics are pretty similar for every race. You have to be in your good shape, some tweaks are there, your bikes are there, the crew is almost same. So basics are similar, just the terrain is new. So that's just Yeah. 10% of the event, and then I did just climbing and climbing. So this climbing, did you do indoors or did you do outdoors Yeah, it also? was Because mixed of indoors and outdoors. So mostly I stick acha, to indoors. Okay, it doesn't make any difference for me to go out and do these climbs, because right now the trainers are pretty similar to the outdoor conditions. Okay, only what different thing we can get is the downhills are pretty slow on outdoors, and indoors, there is no need of controlling anything indoor. on downhills. You go at like 190, even if you are not sitting on the bike. So I do mostly indoor climbing. So my climbing has been always indoors. So I enjoy doing climbing sessions indoors. So yeah, it was totally indoor. Okay. So let's say a beginner who doesn't have a smart trainer, just say like in between का Android 500 है. So for Yeah. them also, do you recommend that they can train indoors with so much? Let's say they're training for this race. So can Beginner, they also? frankly speaking, beginner can't finish this race in this time. Okay. I'll tell you frankly, you need a very good athlete who is in that process from like long time. Because was doing 13,000 meters of elevation gain. Just imagine, for the first time after my 2019 RAM, I have seen the cutoff timings for the next time station. Okay. Meanwhile, I have done so many races, maybe around 15 races. But for 15 races, I never saw any cutoff timings for any time station. I don't even give a single look at the cutoff timings, because I know that I'll make it, and I'll make it comfortably. But for this thing, I was just having 1 hour buffer. Uh, the climbs are not similar to what we encounter. It is not gradual like 5, 6, or 7 gradient. You will see a climb of like 4 kilometers, which is 10% in gradient. But the first kilometer of the climb, you will encounter something around 3 or 4% of the elevation, and then that average gradient will start increasing. Okay, Ingredient. and then all of a sudden you will start climbing at 22% gradient for like 200 meters, then again 16% gradient for like 100 meters, and then it keeps fluctuating. So climbs are like totally surprising. It will hit you hard in your face, because doing
16 and 20% of elevation gain after riding almost 500 kilometers and doing almost 9,000 meters of elevation gain, that is pretty harsh. So, yeah, I think you need people who have done 600 breves under 25 hours, or maybe someone who has done DC or something under maybe 24 or 26 hours, but he has to be very good in climbing. So with Yeah. that 38 hours of timing, I even suggested organizers that now I have finished, so I can just suggest you that you need to give more time. Okay, if there is like 44 hours of uh, thing, then it is actually good to do it for a lot of people, because see, only climbing is not the difficult thing on that route. We encountered rain. It was lot of rain. It was pretty cold. For the Mhm. first half, like till we reach around 270 kilometers, till we take the left for the Manali, we encountered super heavy headwinds. So you Oh, will get everything. You have to be mentally so good. I'll tell you, after doing 3 RAAMs and all, people think that अरे कोई problem नहीं होता होगा या 600 में भी, you never know आपको कौन सा event कितना ज़्यादा difficult लगेगा. uh, Not something I was finding it difficult because of the climbing or the weather or the road conditions. It was only difficult because of the distance and elevation, which we have to cover it in like these 38 hours. And the road conditions are not that good where you can go fast on the downhills at 50, 60 yes. kmph. The downhill and the uphill average was pretty same. Okay, I was doing uphills at 14, 15 kmph, but the downhill speed was like 20, 22 kmph. So that takes total your like buffer. So yeah, it is Mm. pretty difficult to do it in that timing. So for those who want to attempt, I would suggest that you have to give at least 2 to 3 hours proper dedicated training for this event, and 2 to then 3 hours. 3 years. 3 years. Okay. Yeah, 2 to 3 years for the beginners. Not even beginners. At least they should have a RAM qualifier or some SR series or something like that. Because the the thing is, it has 38 hours, okay, and the 700 kilometer and then 15,000 meters of elevation gain. But the thing is, you don't get any extra time. Okay, in Himalayan, you get 3 hours of sleep three break. hours of Yeah, yes. you can reset and you can start. In Himalayan, the climbs are very good. So it has a proper gradual percentage. You go at like 6, 7, 8, 9, 10 max. Okay. I never think that it has any 10% or something in Leh because of the army trucks. They have to keep the climbs pretty easy, Gradual. and it is high altitude. Mm. Yeah. So, but here it is like 20, 22, then 10, 15, and the roads are uh, so, Not. yeah, so I don't know, roads are good, but you don't get that proper rolling in these Mm. routes. So, it had a lot of vibration, and then you have to keep your air pressure low, otherwise it becomes very uncomfortable for you. There are a lot of Mm. things, technical things which you have to look at it, and then उसके बाद ये अच्छे से होगा. So I think a lot of outdoor climbing training is required. You have to put in a lot of elevation gain. If you look at it, even the other riders, there were nowhere, मतलब जिन्होंने भी किया उसमें से ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने पहले साइकिलिंग नहीं किया है. ऑल ऑफ वेयर Yeah. लाइक फिनिशर्स ऑफ K2K, ओके, जो कि इन लोगों ने Yes. 11 दिन के अंदर खत्म किया है. सो एवरीवन वाज Mm. लाइक एंड्योरेंस राइडर, बट it takes toll to do that much of climbing. So when you do Yes. these difficult races, you uh, understand that what is the difference between doing a long race which is totally flat, and what is the difference doing a short race but it has lot of Lot climbing. of. Okay, so yeah, so here a lot of things matter. Your FTP matters, your body weight matters, your fitness matters, your patience Mm. level matters, because on flat I don't think weight has to do anything with the flat. If you
put a say like Puru is there and Yeah. some fat rider is there, but the FTP is like too different. Okay, so if the fat Mm. guy has less power to weight ratio, but this guy will go faster than Puru because it is Mm. how it works. Correct. Because fat riders get that benefit on the flat road. So, Mm. but here it is very technical. Like you have to be super fit, you have to be good climber, very patient because doing this much of climbing. With that speed needs lot of patience, and then 38 hours without sleeping, Yeah. because if you are not fast then you can't sleep. Okay, and if you sleep, then you have to be so fast then you can cover that distance. So surviving 38 hours without sleep, doing that much of climbing and that much of distance with such difficult roads. uh, Mm. I was having 10 people crew, three vehicles, all of Three them vehicles. like, yeah, of course. So all of them have collective experience of doing crewing me for like 2 lakh kilometers, even though we were finding it difficult to match with the time and everything. So absolutely, I can shave off around 3 hours or maybe 3.5 hours from this race time. Few things go wrong, of course, but yeah, I think max I can push is like finishing it in like 33 hours or 33.5 hours. But I don't think Mm. going above that will be something. Like, you can bring any international rider, he will find it difficult. But then, if they increase the cutoff from more than 38 hours, then it will not be RAM qualified, no? Or will it be? No, Because कुछ it has रहेगा to ना be a उसका. RAM qualifier, okay, because it's at the hands of the organizers, okay. If अच्छा. you, yeah, because if you see, DC has 32 hours, okay, to finish 400 within miles. RAM. It had 650 kilometers and it has Yes. 5,000 meters of elevation gain. Whereas here, the elevation gain is triple than More. DC, Yes. okay. Distance is 50 kilometers more. Okay, Mm. so triple and DC, even if you see a strong rider, he will take at least 1 hour to do 1,000 meters of elevation gain. We are talking Yes. about the elite category of the climbers. Okay, so then 10 hours तो यहीं पे बढ़ जाता है यार, मतलब climbing में ही, अगर आप elite category लेके आते हो तो भी. So it goes Correct. around like 44 hours. I don't think will be an issue to get a RAM qualified thing. But I don't Okay, know okay. if they want to keep it like this hard. So that is also okay because मैंने तो खत्म कर लिया, so मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता अभी. But yeah. So, नहीं मतलब but I wanted yeah. to know कि they consider elevation also basically, not just Yeah, distance of course for they consider the elevation qualifying a also, race. because if it's flat, if you see the Borrego Springs ka 6 12 24 hour, you have to do Yes. 640 kilometers in 24 hours. So Oh, that is because it is mostly flat. rolling. We can't say flat because in 640 kilometers also you gain somewhere around 2,800 meters of elevation gain. Okay, so Okay. it's kind of rolling, like half elevation of the DC, but it's like in a loop. So so 640 doing in 24 hours is pretty difficult. So yeah, for a lot of people. So yeah, so they consider everything like elevation gain and all the things. तो अगर मेरे को पूछेगा तो then K2K को भी कैंप क्वालिफाई नहीं देना चाहिए because they give 16 days or maybe 14 days. No, no, it is 14 days, I think. 14 or 14 12 days, days. 3,600 kilometers. No, not 12, 14 days. 14 days. 3,600 kilometers. Then what? It comes to 280 kilometers daily. अब नहीं 300 ना. अच्छा 14 days है तो 300, 280. 280. So 280 is not a big task for a lot of people. Like तू 6 घंटा सो के भी चला लेगा. So then, हाँ. People yeah, have a it's, lot of good equipment also nowadays. yeah, 15,000 meters of elevation gain in entire 3,600 kilometers. So yeah, they consider everything because it has long distance. So that's why they have given this RAM qualifier. Okay, but the time is too Okay. much. But if we Hmm. want to train for like RAM, then you have to finish K2K under 7 days. Yes. Otherwise, then there is no chance of doing a बराबर. RAM. Yeah, it doesn't make any sense because you have seen even Amit sir.
So he Yes. has done it in under 7 days. Less than 7 days. And yeah, and RAM, he does it like 12 hours before the cutoff. So see the gravity. Okay. Yeah. कि इतना करने के बाद भी then you are like 12 hours closer to the cutoff. So then अगर आप Correct. 14 दिन में K2 के खत्म कर रहे हो, 12 दिन में खत्म कर रहे हो, तो रैम तो भूल जाओ, बस नहीं होने वाला है. So सवाल ही नहीं Yes. है. मतलब there are like different criteria, then but it will be Hmm. fun if they give some cutoff of like 9 days, then that will be fun. Yeah. Yeah. And what about the oxygen problem in this race? Like Himalayan man, it's high altitude. This also is high altitude only, na? Like No. Manali, So see, Kullu, Manali is Rohtang tak it goes. on high altitude. Okay. So, but the thing is, you start from the Hoshiarpur. Okay. And then you go there by road and then come back. Even for the high altitude, if you land in Leh on day one, your blood has enough oxygen to do any event. So there are two tricks to do any high altitude events. Either you land on the day of the event, or you go 7 to 10 days or 12 days before the event. Okay, if you have a 20-kilometer run, you can land on same day, you can do that event and leave immediately. Okay, so your body has that enough oxygen in your system. So to be leg, so you know the difference between first day and third day. Third day you will find it bit difficult to adapt. First day ऐसे लगता है कि अरे मैं तो normal हूँ, कुछ नहीं हो रहा है. But people suggest कि बाबा आराम करो, next day problem होगा, next day problem होगा. So that Yes. is because your body, so you go to Leh, okay. So you go to Manali from Hoshiarpur. So your Yes. body has enough oxygen, everything is there. Even in Acha. RAM and all, if you see, you go to Wolf Creek Pass on one day and then you start doing downhill. So that doesn't happen if you are like fit, like our fitness levels are like at that thing that going to a high altitude and then immediately coming back won't make any issue. Leh thing is totally different because Leh is like you're continuously at that high altitude. So you have Hmm. to make sure that your body is like properly adapting this. So even what I was telling कि जब आप high altitude जाते हो, then you can do this event on the same day. I was talking about just for like 10-kilometer run or 20-kilometer run or something like that. You Yes. can't go for like 400-kilometer cycling and then Yeah. कि बाबा हो जाएगा, then because that will take a lot of toll. Any event which can be like there for like 2 hours, 3 hours max, and then you have to leave immediately because that will affect you like on second day. This is not suggestible, but yeah, of course, there are like these loopholes what you can do and everything, but nobody does events so quickly because there are like so many things. You have to go there, you have to Yes. pick up your and everything. But yeah, for such events, when you are going to a high altitude and then immediately you're doing the downhill, then it doesn't matter. But Leh is like totally different game. So yeah, So you have done all the four races, like Great Himalayan, then this Romantica, and then Ultra Spice correct. and DC. So Yeah. according to you, how would you rate this race in all these four races? Which one is most difficult? See, if we Sorry. see all the races are different. ठीक है? Hmm. All the races are different. Ultra Spice has different challenge Yes. because it is like 5 day event. Uh, there is like lot of climbing, lot of distance. Crew management is there. You have to Yeah. put everything on test. Okay, so Ultra Spice it's something like a test match, which is not a game of someone who is like new for cycling or something like that. Okay, Himalayan, I would say Himalayan is altitude is the only thing which makes it difficult. Okay, but if Okay. you see the concept, you get 3 hours of sleep after doing 380 350 kilometers. kilometers. That Huh. is, yeah, that is a treat. Okay, so 3 hours after doing 380 kilometers and then 220 kilometers after the sleep break. So that is like a BRM. The roads are very good. Okay, so that challenge is not there that the road conditions Yes. are bad. The if you get heat, then what lag jata है लेह में. Okay, Correct. 2000
19, I have done Himalayan. So the temperatures were like from 0 to 40. Okay, इतना difference था. Yes. And then और धूप में वहां पे चलाना is unbearable. So Desert है ना? yeah, because that challenge is there. Hmm. Then distance wise, it is not too big. So 600 kilometer after doing lot of training, अगर आप acclimatize properly कर लेते हो, so that becomes doable, easy. Time भी बहुत ज़्यादा है, 38 hours, you get 37 hours. Okay, 37. 37 hours, 600 kilometers plus 3 hours का sleep आपको मिल जाता है. So it is doable. Uh, so, and if you consider DC and then Romantica and Himalayan, so DC will be the easiest one. Yeah. Okay, but DC में the competition is more, so you don't get to get that time to make Relax. any mistake. So I think DC is the easiest one out of these four races. Okay, let me put it this way. Romantica and Himalayan, I would say we can't compare these things because Himalayan goes into totally different category because it is a high altitude race. Okay, Yes. either you will make it or you will break it. Okay, there is no medium wala thing in between कि यार तुमको problem हो गया लेकिन तुम रुक गए and then you can come back. There is no comeback in that race. ठीक है, एक बार अगर तुम Hmm. उड़ गए तो then उड़ गए. So Himalayan is dangerous and risky. ठीक है, Romantica Okay. is tough. Yeah, Romantica comes into that tough wala category because there is nothing, you don't get any medical issues or something like that because you're riding in a good Hmm. climate, oxygen level is good, weather is very good, the air quality is very good, so you're getting pure oxygen. Okay, that is very important for Yes. your performance. But in Leh, that is like totally 40% oxygen is gone, so then Yeah. you're performing on a 60% oxygen. So that makes it difficult. So I think if you see one day difficulty cases, so Romantica will, of course, top the chart for the difficulty level. But yeah, this Himalayan is totally different. So Hmm. yeah. Yeah, Okay. and Ultra Spice, we know that it doesn't Yeah. come in the cases ka categories. Ultra Spice is Multi-day. like tougher than, yeah, Ultra Spice is tougher than K2K. Ultra Spice is tougher than East to West. Ultra Spice is as good as race East around Austria. East to West कौन सा रेस है? है एक जो खत्म नहीं रेस नहीं इंटरनेशनल. है बट या नहीं यहाँ पे ही है. इंडिया में ईस्ट टू Oh. वेस्ट करता है बट दैट इज फॉर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर्पस थिंग. अच्छा अच्छा. हाँ या हाँ. Okay. मतलब And in के this टू के भी वहीं से आया है, मतलब के टू के भी तो रिकॉर्ड ही okay, करते थे सब लोग. like या this. सो या सो ऐसे जाना है ऐसे जाना है, सो या वैसे करना है Okay. बस. In या this race, what was your obstacle time? 3 hours. Okay, only 3 years. Yeah, It yeah, was not for yeah. sleep, Only right? it is too much actually for me because in DC I go like 7-8 minutes of off settle time. I हाँ slept वैसे around. Yeah, मतलब. I slept around 45 minutes. Okay, a lot of time was went into changing layers. बारिश हो गया तो बारिश के कपड़े पहनो, फिर वो निकालो, शू कवर, then jackets, head cap, everything, because the small thing also takes like 10 minutes to do it हम्म. everything, because करने वाले 10 जरूर है लेकिन करना एक के ऊपर ही है. So वो सारी चीजें करने में बराबर. इतना टाइम चला जाता है. Yeah, so that is there, and then या आई डोंट नो, थोड़ा 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 करके ये टाइम तो जाता ही है. सो या Yes. 3 hours went and then 34 hours was like riding time. So now we have covered Romantica race के Yeah, most of the questions. Now I yeah. wanted to ask you about training. Let's say there is a beginner and he wants to get into ultracycling. So Mm-hmm. what according to you should be his like steps, or let's say first BRM, then this race, then this, and slowly, what all things can how much can one progress in 2 years time span, let's Yeah, say, according to yeah. So see, it is totally different with everyone. Okay, some you? Yes. few people are like hardworking,
but their body doesn't support at all. Okay, and few people are like super fast, so they don't have to take a lot of efforts. Okay, but even after taking a lot of efforts, also few people don't reach at that level. But the only thing to test everything is like start riding regularly. Okay, maybe 1 hour every day, and then like 2 to 3 hours on a weekend, taking 2 rest days in between, because if you are working and everything, so you have to keep good rest time. Okay, eating proper food, eating good nutrients, then protein and everything. Then after, once you keep riding like 3 months, 4 months, when you are pretty regular after this, okay, it take almost around 7 to 8 hours a week. Of Then training. after that you can, yeah, then after that you can go for like doing a 200 kilometer BRM. Okay, so then try 300, 400, 600, but after giving a good gap. Okay, so like 200, then Mhm. again 3 4 After a days month. off, and then again sticking to regular training, and then again after a month then going for a 300 kilometer. Okay, choosing a proper terrain. So at start only you can choose a difficult route. Okay, say like Yes. I'll do a Mumbai Pune Wow. back road because it has a lot of climbing. Okay, Yes. so you have to choose a flattish road or something, or if there are no options, then just go yourself, do a 200 kilometer ride. Uh, Even on a single small loop also works. Okay, say like pick and choose a 10 Gujarat kilometer Highway. loop. Yeah, Gujarat Highway. I don't know. It has a lot So of you don't traffic. recommend. Yeah. So I would say Palm Beach is good. Even if you're doing it like 14 kilometers ka loop, that is also okay. At the end, you are riding. Yes. ठीक है, so that is also okay. I don't even mind doing a 5 kilometer loop for like 300, 200 kilometers. That will make you What? mentally stronger. Yeah, that will make you mentally stronger to ride in same scenic scenery and everything. So that takes mentally toll on you. So it's always a good training to do such loops. Then in that weekly training also you have to go for like hill repeats or something Yes. on a day or 2 days, some flat road miles, okay, and these things. उसके बाद 600 वगैरह कर लिया, then they can once they start doing it like always I tell everyone that in BRM, okay, don't consider your BRM का performance with the DC. ठीक है, BRM में बहुत Hmm. लोग होते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि अरे मेरा मूविंग एवरेज 30 था और मैंने फिर इतने इतने टाइम में DC चलाया, लेकिन वो 30 एवरेज आना इज नॉट अ बिग थिंग बिकॉज यू टेक लॉट ऑफ ऑफ सैडल टाइम. ओके, इन Correct. DC you have to be on the bike. You don't have Yes. that luxury to stop on ढाबा, eat something, जब चाह मन किया चाय वाय पी लिया, ये सारी चीजें नहीं होती डीसी में. सो बीआरएम को डीसी वगैरह को कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज बोथ आर डिफरेंट थिंग. देयर इज लाइक बीआरएम में आपको इतना स्ट्रेस नहीं है बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन. आपको एक Yes. टारगेट है, आपको खत्म करना है, फिर भी लोग चीटिंग करते हैं आजकल बीआरएम में. दे आर लाइक पुट देयर Oh. बाइक्स इन ऑटो एंड एवरीथिंग, एंड देन आई डोंट नो व्हाई. सो मतलब कुछ गेन तो है नहीं उसमें से, लेकिन लोगों को चीटिंग करना. सो बट if you consider DC and all, so डीसी में भी अगर आप देखो तो डीसी में देन you get you have to be fast, you have to be on the bike, you have to ऑफ सेटल uh, टाइम कम करना पिछले या सीखना. वेरी लेस होना चाहिए. तो जब आप 600 का बीआरएम वगैरह व्हेन यू डू इट इन लाइक अंडर 35 आवर्स, सो देन दैट इज अ गुड इंडिकेशन दैट यू विल डू डीसी बिकॉज Yes. 35 आवर्स है. सो इन 35 आवर्स ऑल्सो यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, बट इन डीसी यू विल हैव योर क्रू टू डू एवरीथिंग. So, Yes. and then when you do DC under like 28 hours, 26 hours, that is something a good indication that you can go for like ultra spice and try some multi-day event. Because Okay. if you're doing like DC and everything in under 28 hours and these timings, then there is good possibility that you will be good in ultra spice or something like that. I've seen a lot of Hmm. people as well, they are like training from years. Okay, there is no growth in speed, uh, no growth in their training patterns. Okay, they will just go there and just
log lot of miles. There is nothing different in this. So एक phase आ जाता है body का, then when your body doesn't respond, okay, you already touch your limits, ठीक Too है? much So different. yeah, so that is not a good uh, ये so I'm not someone who thinks कि अरे there is no limit or like ये बहुत ही मतलब you can always improve or something. uh, the day when I'll stop improving, I'll stop cycling. I'll be really frank. Okay, so जिस दिन मेरे को लगा कि मेरा टाइम नहीं ग्रो कर रहा है, I'm not being fast or I'm not improving something, I'll stop cycling. बस I know then उसके बाद मेरे को मजा नहीं आने वाला है, मतलब मैं किस चीज में improve करूँ. Okay, now I know that I have lot of room to improve. Every time I go for DC, I know that I can do it like 20 minutes more faster. So I know that that is going on. अगर वो नहीं होता तो I'll be in stress कि बाबा नहीं हो रहा वो, और नहीं होने वाला है, एंड यू गेट टू नो कि ये नहीं होता है, ठीक है? सो आपको पता Yes. चल जाता है उसके बाद क्या लिमिट है और क्या होने वाला है. ओके, सी से लाइक इफ Right. कोहली उतना फास्ट खेलता है, ठीक है, कोहली उतना फास्ट मारता है, उसका मतलब ये नहीं कि बुमराह प्रैक्टिस कर करके कोहली बन जाएगा बैटिंग में, ठीक है, या फिर कोहली प्रैक्टिस कर करके बुमराह बन जाएगा बॉलिंग में. दैट इज देयर टैलेंट, दैट इज Yeah. देयर स्किल्स. वो वैसे ही बॉर्न होता है और वो उसको गार्निश करते हैं, उसको स्किल आता ही है वैसे. सो we can't unnecessarily put ourselves into stress and then उसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि अरे नहीं नहीं ये हो जाएगा, सिर्फ हार्ड वर्क करना बाकी होता है. दैट इज गुड टू मोटिवेट, बट दिस इज ब्लैक एंड व्हाइट थिंक कि बाबा एक बार वो ग्रोथ रुक गया, सो देयर इज नो चांस दैट यू विल ग्रो. ओके, वी हैव सीन स्ट्रासर डूइंग RAM. His best time was like 7 days, 7 days. 12 hours. Yeah. Okay. Yes. But उसको भी वो बीट करना बाद में पॉसिबल नहीं हुआ. ओके, इट इज नॉट समथिंग कि वो ग्रो नहीं किया. ही हैज डन लॉट ऑफ आफ्टर रिकॉर्ड्स, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन रैम व्हिच हैव टू बी इन योर फेवर. विंड्स हो गया, वेदर हो गया, क्रू का काम हो गया, बाकी सारी चीजें हो गए. इन 24 hours ही इज लाइक improving day by day. Okay, that's why he's breaking his own records and everything. So ये सारी या एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना होता है कि आप कितना ज्यादा ग्रो कर रहे हो. सो वंस यू नो दैट यू डोंट हैव इट इन यू, अगर आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो उसमें, और अननेसेसरी आप हमेशा हमेशा ट्राई कर रहे हो कि अगर मेरे को हमेशा जाना है और जाना है जो भी करना है, so then that is a good thing to change your some target. Okay, rather than going for like fast races or something, focus on some touring races or Yeah. something Bike which is packing. self-supported thing where you have enough time, where you can improve properly. Okay, so then you have to set your targets properly. If someone is not able to do a BRM in 40 hours, there is no sense in signing up for DC. Okay, Correct. then कुछ नहीं होने वाला है. Yes. And for me, frankly speaking, finishing an event in a time is most important. Once your cutoff time is gone, that event has no value. Okay, it is good for ourselves to just get that motivation. कि यार Yeah. चलो मैंने इतने टाइम के बाद भी चलाया, but you have to be strict with yourself if you have hard targets. Okay, if आपका टारगेट ही यही है कि यार हमको एक बार DC चलाना ही है, ओके, मेरे को रास्ता देखना ही है, मेरे को वो फील लेना ही है, then go, then do it. But if you are racing to win or racing to finish in that proper criteria of being a RAM qualified Timing. racer or something, so then cutoff timings are like super strict. मतलब आपके लिए बहुत important है वो मिस ना करना, ठीक है? So Yes. because if you reach 1 minute late at the RAM, nobody will consider your timing कि अरे 5,000 किलोमीटर चला है लेकिन 2 ही मिनट लेट हुआ है तो हम लोग ये कर लेते हैं. सो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है. So you have to be very strict with your timings as well. Correct. I Yeah, agree because yeah, then why the timing is for a reason. yeah. Correct. And if you see, the cutoff is like 2 hours. Okay, few people reaches in 2 hours, but few people reaches in 2 hours 5 minutes. Yeah. Considering that timing is harsh on the people who reach in time, because they sacrificed something to reach in time. Okay, they didn't sleep,
और दे डिडंट ईट समथिंग बाय स्टैंडिंग कि बाबा मेरा टाइम खराब हो जाएगा या जो चीज भी Correct. है, से लाइक अल्ट्रा स्पाइस, ओके ठीक है। वन रेसर इज नॉट स्लीपिंग, गाड़ी पे बैठ बैठ के जोन ऑफ होके स्लीप डिप्राइव होके हेलुसिनेट कर करके अगर उसने खत्म किया 120 Very घंटे time. में, हाँ. yeah, and if some rider reaches and like 121 hours, लेकिन वो हम्म, 1 घंटा सोया, कम रिस्क लिया, देन फिर वो ये नहीं रहेगा ना, मजा ही नहीं रहेगा। देन बराबर. 120 आवर में खत्म करने वाले को लगेगा कि यार फिर मैंने क्यों खत्म किया, मैं भी 1 घंटा सो के कर बराबर. लेता। सो दैट्स व्हाई दीज कट ऑफ टाइमिंग्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली, ठीक है। So that's why they have these cutoffs, RAM qualifier, and then their own Inspire India timing limits, ठीक है। मतलब हम्म. अगर आपका ये नहीं होगा तो देन टारगेट फॉर इंस्पायर इंडिया टाइम। सो यू जस्ट मेक योर प्लान कि बाबा मेरा कितना एबिलिटी है, ठीक है। मेरे को अगर ट्रेन हम्म. करके मैं जाके रैम क्वालिफाई बनना है तो यू हैव टू बी दैट फास्ट। अगर आपका वो टारगेट नहीं है देन फोकस फॉर इंस्पायर इंडिया का टाइम कट ऑफ, ओके। देन Yeah. फॉरगेट अबाउट दैट 32 आवर्स वाला थिंग। एंड वन मोर थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल दैट डोंट get this distracted by other people ka training and their riding skill and their thing, because you don't know how that guy is training, how is his nutrition thing, how his crew works, how his body is feeling। because अगर आप देखोगे कि किसी ने किसी को ओवरटेक भी कर लिया then these guys will start pushing for some time, they will be Yes, not yes. able to keep up with them for like 10 minutes, but they will push, but pushing for those 10 minutes will eat their at least 1 hour after the night, because they will get tired, they will get slow, फिर बाद में ये सारे प्रॉब्लम्स चालू हो जाना चाहिए। तो यू हैव Yeah. टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर टाइमिंग्स। So once long. you know that yeah once you know that you have the skills then you can compete, but it is very हम्म. rare thing that if somebody from behind overtakes you in ultra cycling, it is very difficult to catch that person and then overtake him, because he is riding somebody. If someone overtakes you, he is of course very comfortable while overtaking you, and Correct. then उसके बाद जाना। So you have to be mature कि बाबा ये रेस है, but then race against the time, okay। then you have 32 हम्म. hours, you have to beat that time। so ये सारा Correct. मेच्योरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डूइंग दीज रेसेस, ठीक है। बहुत लोग बहुत इजी एटीट्यूड से आ जाते हैं कि अरे क्या है, कुछ नहीं हो जाएगा, डीसी तो है, या जो भी है। मैंने कितने लोगों को देखा है, जितना मैं खुद सीरियस होता हूँ उससे बहुत लोग बहुत ज्यादा लाइटली होते हैं फॉर डीसी। आफ्टर इवन डूइंग लाइक 6-7 टाइम्स डीसी, मेरे को पता होता है कि क्या क्या इश्यूज है, बट बहुत लोगों को ना पता हो कि भी दे आर सुपर लाइट। मतलब अरे हम्म. कुछ नहीं, जाएंगे गोवा में पार्टी करेंगे, बियर पियेंगे खत्म होने के बाद, और ये वो फिर कोल्हापुर में डीएनएफ हो जाता है, फिर उसके बाद रिटर्न जाना पड़ता है। So these things happen because they don't know the gravity. हम्म. For me, if you're signing up for any event, then be dedicated, okay। मेक इट एज अ प्रोजेक्ट कि बाबा तुमने हाथ में कुछ असाइनमेंट लिया है और जो खत्म करना है प्रॉपरली तुमको। ऐसे नहीं कि साइन अप कर लिया, 4 लोगों को ढूंढ लिया कि चलो यार ऐसे ऐसे गोवा जाना है, जिनको कुछ नहीं पता है, जिनको पता है कि सिर्फ चलो गाड़ी चलाना है, जो लोग रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, इनका खुद का ब्रीफिंग नहीं होता है। सो दे डोंट हैव एनी, ये वो लोग चलते चलते सीख रहे कि क्या करना है। आई हैव सीन पीपल स्टैंडिंग ऑन द रोड, क्रू वाले डीसी पे, crew people were standing for the sutta break। like this is not the time to stand for sutta break and आपका अरे बाप राइडर रे. चला गया आगे और आप लोग वहां पे खड़े हो के ये कर रहे हो। योर राइडर नीड्स यू। और ये होता है लैक ऑफ ब्रीफिंग, जब आप लोगों को नहीं बताते हो कि क्या क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें होती Yes. है। तो ये सारी चीजें होती है। सो यू नीड अ गुड टीम हु कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द रेस, ओके। हम्म. till date, total 47 people have crewed me, okay। all of them हम्म. were good, okay। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, but now we have like finest people of ये। so I have almost like 24-30 people who are like at that level कि जब मैं 3 टीम बना सकता हूँ प्रॉपरली उन लोगों को लेके। we have to pick and choose कि बाबा कौन इस रेस में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन रैम के लिए अच्छा है, कौन डीसी के लिए अच्छा है। ये सारी चीजें करके आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है, एंड दैट कम्स आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ इवेंट्स, लॉट ऑफ Yes. time when you spend time with your team, when you have good relation with your team,
हम्म। मतलब मेरे टीम में तुषार है, रत्नु है, ओके, वैसे ही मेरे और 5-6 दोस्त है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं कॉलेज से, बट वो लोग मेरे टीम में नहीं है बिकॉज मेरे को पता है कि वो लोग क्रू मेंबर नहीं बन सकते अच्छे नॉट से। आइडियल। सो यू हैव टू, या बट सो यू हैव टू टेक योर कॉल्स प्रॉपरली कि वो उस बंदे का एडजस्टमेंट कहाँ पे होता है क्या नहीं है। सो बिल्डिंग अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग मेरे को फोन करते हैं, पूछते हैं कि मेरे को डीसी करना है या मेरे को अल्ट्रा स्पाइस करना है। कुछ कुछ लोग तो होते हैं जिन्होंने 200 भी नहीं किया लेकिन उनको रैम करना होता है सीधा। या सो लोग सीधा पूछेंगे कि मेरे को रैम करना है, एंड इफ आई आस्क देम कि आपका लॉन्गेस्ट राइड कितना है, तो दैट इज 300 किलोमीटर, एंड दे आर लाइक कि बट मैं चला सकता हूँ 600, बट आप पहले चलाओ तो उसको, और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे। सो एंड देन इफ आई टेल देम कि बाबा टीम का बहुत ज्यादा मेन है, लॉट ऑफ पीपल आर लाइक टीम तो बन जाएगा, टीम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो ये सब लोग ऐसे ऐसे है और जो कुछ भी है तो कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं नहीं। ये नहीं है। और मेरा भी फर्स्ट रेस के लिए वैसी एटीट्यूड था, बट मैं लकी था कि मेरे पास थोड़े इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग थे साथ में, सो वो चल गया मेरा कि ठीक है। But you need a good bunch of people, otherwise your race is gone. So यस। being a team is good. Having a coach is very important because एग्री। see, if I बिल्कुल। train someone, ठीक है, if I हम्म। train someone and if he is doing DC, so if he goes without a coach, he will do all the trial and error. But यस। for his first DC, he is getting experience of my own 36,000 kilometers of racing. Okay. For like 20 races, what I have done correctly, wrongly, और जो चीज भी है वो उसको आउटफ्रंट मिल रहा है कि बाबा ये गलत जा करेक्ट। सकता है, ऐसे देखो करना है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन ये यस। भी जब नॉलेज इजीली मिल जाता है, पीपल डोंट टेक इट सीरियसली, ओके, सीरियसली। बिकॉज ये तो बहुत इजीली मिल रहा है। फोन करो, कबीर ने बता दिया, ये पूछ लेते हैं, ये हो जाएगा, बट वो अप्लाई नहीं होता है। इफ यू गो टू अ बैंक, ओके, इफ यू आस्क समवन कि बाबा मेरे को ऐसे ऐसे पैसे डिपॉजिट करने हैं, इफ समबडी टेल्स यू, ठीक है, कि इधर लाओ मैं आपका स्लिप भर के देता हूँ और ये लेके जाओ, हो गया, दैट्स इट, तू भूल गया। लेकिन अगर तू जा रहा है बैंक में, तेरे को कैशियर ने स्लिप दिया, वो बोला कि नहीं आप पढ़ो, आप भर के लाओ, फिर मैं करेक्शन करूंगा, फिर आप लेके जाओगे, फिर उसमें 4 गलती निकलेगा, फिर आप करोगे, देन यू रिमेम्बर दैट प्रोसेस, ठीक है। करेक्ट। फिर उसके बाद तू खुद जाएगा तो तू 4 लोगों को बता सकते हैं कि यार ये ऐसे गलत होता है। बट बराबर। जब आपको ऐसे परोस के नॉलेज मिलता है, देन यू नीड दो सीरियस पीपल जो उसको एक्चुअली सीरियसली ले, ठीक है। करेक्ट। सो तभी जाके वो होता है। अगर मेरे को भी चल टिकट पुरु के टाइम पे, ठीक है, अल्ट्रा हम्म। स्पेस के टाइम पे, आई थिंक व्हाट इज हिज नेम, आई आई नीरज। आई यस। नहीं नहीं नहीं, दैट गाय हु इज वेरी अटैच्ड विद पुरु, आई डोंट नो व्हाट इज हिज शाश्वत नेम। गुरु रामकृष्ण राम नहीं, दैट गाय कृष्णा। तेरे लाम लाम केस होते थोड़े से, ही वाज इन डीसी आल्सो आई गेस, नीरज विथ नीरज। हिम। हाँ हाँ, ओके, आई डोंट नो, हाँ, निकल निकल निकल, करेक्ट। नीरज। सो आई थिंक he approached me, he sent, he told me की कसा कसा प्लॅन आहे मला सांग. I told him की you make a plan, you send me, I'll check it and I'll give you the corrections. ठीक आहे. हम्म। सो काय होतं त्याच्यामध्ये की तुमची एक रिव्हिजन होऊन जाते स्वतः बनवण्यामध्ये, ठीक आहे, की बरोबर. बाबा मला कळतं की तुमचा काय कॉन्सेप्ट आहे, तुमची काय आयडिया, तुम्ही किती तास झोपणार आहे, तुमचा काय प्लॅन आहे. सिलेक्ट बरोबर. आधी इनिशियल प्लॅन बघशील तर त्यांनी मला 2 स्लीप ब्रेकचा प्लॅन पाठवलेला. सो आय आस्क्ड हिम की तू कसा 2 स्लीप ब्रेकचा प्लॅन करतोस. सो लाईक स्टार्ट होणार 1750 ची गेस आहे, 600 नंतर एक ब्रेक घेऊ, नंतर दुसरा ब्रेक आम्ही 600 नंतर घेऊ, 1200 होतील आणि शेवटचे 600 आम्ही नॉनस्टॉप चालू. लाईक तसं नाही होत. 5 दिवसांची रेस आहे, तू विचार कर, 5 दिवस चालवायची आहे, ओके, कट ऑफ 120 तासांचा आहे, तू 5 दिवसांमध्ये 2 दिवस तर झोपणार आहेस का तुझ्या रायडरला. सो देन त्याला एक आयडिया येते की बाबा हा, अरे हा तर मी विचारच नाही केला. सो ह्या गोष्टी सगळ्या होतात. सो देन त्याच्यानंतर मग हे सगळे करेक्शन होणार, बिकॉज फर्स्ट अल्ट्रा स्पाइस मी जेव्हा केलेली तेव्हा मी 112 तासात संपवलेला, ठीक आहे. ओके. आणि तेव्हा माझी वाट लागली होती स्लीप डिप्रिव्हेशननी. मला 4th डे ला ऑलमोस्ट हॅल्युसिनेशन्स व्हायला चालू झाले होते, बाकी सगळ्या गोष्टी. सो तेव्हा पण मला महाजन ब्रदर्स सोबत मी गोल्डन क्वाड्रिलॅटरल केलं होतं, म्हणून मला एक आयडिया होती की बाबा तुम्हाला किती वेळ झोपायला लागतं, कसं असतं. तुम्ही हा. कसं झोपू शकता, काय करू शकता. सो दिस इज हाऊ इट वर्क्स, बिकॉज आणि आता देन आय कॅन असिस्ट एनीवन की कितना सोना चाहिए. You हम्म. can sleep for like 3 hours and then
start riding and all these things. So having a good coach is very important, who can give you, see, there are a lot of coaches who are certified coaches, okay, but what comes with Experience. experience is totally different, okay. Agree, The agree. guy who is coaching you, who haven't done a 400 kilometer in his life, he can't coach you for 1800 or RAM. ठीक है, Yes. it needs a Correct. different level of ये when you don't know what is sleep deprivation, what you will tell your trainee कि बाबा sleep deprivation क्या होता है, ठीक है, Hmm. तुम कैसे उसमें से बाहर निकलोगे, what you can maybe what you can experience on day 7 of your riding, day 8 of your riding, what you will Hmm. experience on 12th day of RAM, okay. So Correct. ये सारी चीजें जब एक्सपीरियंस होता है किसी को, देन दे कैन टेल. अदरवाइज तुम जा रहे हो कि चलो यार ये सर्टिफाइड आयरनमैन कोच है, साइकिलिंग तो सिखाता है, सबका तो बेसिक ही होता है. मेरे को किसी ने, ऐसा नहीं होता है. आई डोंट नो, आई थिंक दैट गाय स्टेज इन जर्मनी और समवेयर, सो ही messaged me and he was like, I want to train with you and something something, and then he asked me what is the difference between Zwift का training and your training. लाइक बस Zwift का ट्रेनिंग देने वाले ने मे बी रैम नहीं किया है 3 बार, लेकिन मैंने किया हुआ है. और दिस इज नॉट समथिंग, ट्रेनिंग सबका सेम होता है फ्रैंकली स्पीकिंग, ओके. दे आर लाइक सेम काइंड ऑफ इंटरवल, सेम काइंड ऑफ थिंग. But experience. सब लोग जोन 2 जोन 3 उतना ही देते हैं, सब लोग का एंड्योरेंस राइड का उतना ही होता है. देयर आर लाइक फ्यू स्मार्ट कोचेस हु बिलीव इन स्मार्ट ट्रेनिंग, ठीक है, कि बाबा तुमको अननेसेसरी पुश करने का जरूरत नहीं है. Don't do 24-22 hours का training in a week, okay, because you will not recover. So you need smart people to take such kind of Guide training, you. ठीक है. Yeah, and Yes. then again उसके बाद जो difference है, that is एक्सपीरियंस कितना है वो बंदे को, वो तुमको क्या क्या True. असिस्ट कर सकता है, ठीक है. देन मैनेजिंग योर फटीग, योर फॉर्म, योर फिटनेस की अगर तुमको कभी, और जितना लोग, सो आई एम एट अ लेवल वेयर आई टेल माय ट्रेनीज कि बहुत तुमको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तुम खुद मेरे को बताओ कि मेरे को ये इशू हो रहा है, ओके. जब Yes. तक आप मेरे को कुछ पूछोगे नहीं तब तक मुझसे नहीं, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ. एट द एंड ऑफ द डे मेरे को नहीं पता चलने वाला है कि यार वरुण को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा होगा, शायद से मेरे को सपने में आया है, वो नहीं आने वाला है. मेरे को लगेगा जब तक तुम मेरे को कुछ बता नहीं गए हो तुम एकदम अच्छे से जा रहे हो. नो न्यूज इज गुड न्यूज. सो Yes. अगर तुमको इश्यूज आ गए, जब तक तुम मेरे को पूछोगे नहीं, बोलोगे नहीं, तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे. सो ऐसा भी नहीं है कि यार चलो कभी का कोचिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, जस्ट साइन अप कर दिया, कभी अपलोड करता रहेगा, मैं करता रहूंगा, हो गया, फिर नहीं इम्प्रूवमेंट होने वाला है. एंड आई एम नॉट समवन जो True. मेरे को विच बिलीव्स कि आप खुद होके पीछे लग के फॉलो अप देके लेके लोगों से करवाओ, बिकॉज वो मोटिवेशन खुद से आना चाहिए. अगर वो मोटिवेशन नहीं है तो मत करो. सो Correct. वंस यू हैव दैट That. मोटिवेशन, देन यू हैव टू चेस पीपल कि यार मेरे को ये इम्प्रूव करना है, मैं कैसे करूं, मेरे को इसमें बताओ ना आप क्या करते हो. एंड आई हैव बीन ऑलवेज ट्रांसपेरेंट विथ माय न्यूट्रिशन, विथ माय ट्रेनिंग, विथ माय प्लानिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज एट द एंड आई हैव टू सी पीपल सक्सीडिंग, ठीक है. सो मतलब दैट इज लाइक समथिंग विच पुट्स मी इन सम क्वेश्चन. अगर मेरा ट्रेनी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, ओके, आई आई स्टार्ट थिंकिंग कि बाबा मैंने कुछ गलत ट्रेनिंग दिया क्या, या कुछ मैंने शेयर नहीं किया क्या जो इसको हैम्पर किया, ठीक है. कभी कभी चीजें बहुत बेसिक होती है. समटाइम्स कोई ट्रेनी पानी नहीं पिएगा राइड पे, एंड देन ही विल टेल कि बाबा 8 घंटे के बाद मेरे को फटीग हो रहा, तो ऑफकोर्स होगा, अभी मैं आके पानी नहीं पिला सकता तुमको वहां पे, या तुम पानी भी पियो. दिस इज लाइक ABCD. मतलब वो चीजें तो नॉर्मल है यार, मतलब तुमको पानी पीना पड़ेगा, तुमको स्ट्रेचिंग करना पड़ेगा, तुमको न्यूट्रिशन अच्छा लेना पड़ेगा. सिर्फ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज लाइक 10-15% ऑफ द एंटायर प्रोसेस. न्यूट्रिशन Yes. हैज बिग चंक ऑफ इट, your Crew recovery has management. big chunk of it, yeah, your work stresses has to do Actually. lot of thing with it. So mental things है, जब तक आप mentally properly recover नहीं हो, आप physically क्या recover करोगे, because mental fatigue is lot Takes it more out. than your physical fatigue. So when you have mental fatigue, अगर तू ऑफिस में 10 घंटा काम कर रहा है, so that fatigue will be more than Translated. riding a 10 hours, yeah, because 10 घंटा साइकिल चला के you will be happy at the end.
कि वो मैंने 10 घंटा साइकिल चलाया, थोड़ा सा बॉडी का फटीग है लेकिन वो खा के चला जाएगा, बट मेंटली इतना फटीग डेवलप होने के बाद यू विल बी लाइक स्ट्रेस्ड कि यार मैंने कितना काम किया, इतना सारा ये है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन एनालाइज करना है, ये सारी चीजें है, स्टेक बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें बहुत है जो सारी इम्प्रूव करनी पड़ती है, देन जाके एक एथलीट बनता है कि यार वहां से, मतलब हमने सोचना, जब बात ये क्वेश्चन पे चालू किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक डेली 1 आवर का राइड टू लाइक managing your And now, mental stress and mental everything. Yes, stress. they're like I can talk for like 3 days on this topic कि बाबा कैसे एथलीट बना जाता है अच्छा। You need very good support system as well. Okay, आप साइकिल I चलाने agree. जा रहे हो and if your family is like being harsh on you कि क्यों साइकिल चला रहा है, क्यों कर रहा है, you won't be क्यों able कर to रहे do हैं? it. लोग अपने कितने यहाँ पे बार? बोलते हैं कि, या लोग अपने यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे इंडिया में ओलंपिक मेडल्स नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। यार बस उनका फाइट चालू होता है उनके घर से कि करेक्ट। हमको ये स्पोर्ट्स एज अ करियर लेना है। उसके बाद यस। कहीं जाके उनके फैमिली ने अलाउ किया किया नहीं किया, वो लोग बागी बन के निकल जाते हैं। वो होने के बाद यस। डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन करना, वहां पे पॉलिटिक्स आ जाता है, फेवरिज्म आ जाता है। उसके बाद स्टेट्स में जाना, वहां पे वही चीज है। नेशनल्स में जाना, बाकी सारी चीजें हमने देखा, सारे एथलीट्स बराबर। अनशन पे बैठे थे बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ओके, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अगर ब्रॉन्ज और सिल्वर आता है, was that is equal to 10 gold medals. So ये लोग पीछे का बैकग्राउंड चेक करते नहीं है कि यार कितना ये है, इसमें कितना थिंग है। मेरे को कितनी लोगों ने बोला कि क्या क्या डिफिकल्ट, मैंने बोला बॉस मेरे पास कोई सैड स्टोरी नहीं है, मेरे साथ जितने भी लोग थे वो बहुत सपोर्टिव थे। मतलब मेरे यस। फैमिली से लेकर मेरे दोस्त हो या मेरे कलीग्स हो या जो कुछ भी हो, वो लोग सब लोग इतने पॉजिटिव, इतने ये है। तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, इट्स ऑलवेज बीन कि मेरी वजह से लोगों ने एडजस्ट किया मेरे साइड के, कि बाबा क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को कभी ऐसे एडजस्ट करना नहीं पड़ा कि यार मैं क्या करूँ या जो कुछ भी है। सो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। बट लोगों को बहुत एग्री। चीज है, लेकिन अगर ये पॉडकास्ट कोई सुन रहा है, मतलब जब अगर कोई बंदा सुनेगा जिसमें घर में कोई एथलीट है, तो दैट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे नहीं वेरी वेरी बोलूंगा कि मच। जिसके पास स्किल्स ही नहीं है, जिसको कुछ करने ही नहीं जम रहा है, उसको भी सपोर्ट करो, दैट आई एम नॉट सेइंग। बट इफ somebody हैज दैट कैपेबिलिटी, इफ somebody इज गुड इन इट, अगर कोई कर रहा है अच्छे से, जिसको लग रहा है कि यार नहीं यार चलाता तो है, कितना अच्छे से कर रहा है और बाकी सारी चीजें भी मैनेज कर रहा है, तो जस्ट गिव देम दैट मेंटल बूस्ट या वो यस। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। Yeah, definitely. I can see it in Puru's family very much या happening. His parents are very much supportive. they are totally So, there always for the race and events and everything, so you yeah. need that kind of environment. So अभी देखते हैं Hmm. अगर शादी वादी किया उसने तो वो कैसा माहौल है उसके बाद। वो पता नहीं। Yeah, I ये know. टॉकिंग अबाउट रिकवरी, एक एक सिर्फ Yeah, क्वेश्चन है दैट आई हैव हर्ड yeah, दैट यू यूज वूप का बैंड. So yeah. according to you, how effective it is, and will it, is it really shows the right number? Like suppose it's showing you are very well recovered. Do you really feel that, okay? Or is it like Nice. it just gives you a See, pace? it has a lot of some different parameters. Okay, your resting heart rate, your HRV, your respiratory numbers, and then your sleep time. Hmm. Okay, how much you spend in your deep sleep, your REM sleep, and everything. According to these parameters, it will set your graph. Okay, for in my case, my resting heart rate is 38, 36. Okay, for someone it will be 50, 55. Someone for it will be 60, 62. Okay, that is the baseline. Okay, if my HRV is always like 140, 130, 130 plus. Okay. For a lot of people, even if you see elite athletes also, HRV is totally your, मतलब तुम पैदा ही उसके साथ होते हो कि यार तुम्हारा ये अच्छे ये चीज. So if you see a lot of good athletes, so it is said that if your HRV, which is heart rate variability, so the gap between two heartbeats is Yes. measured in HRV. Okay, so that is ms milliseconds. So which is 140, 130. But if your HRV is above 60, that comes into very good athletic thing वाला. So mine is like 140. So वो है, चल मैं लकी हूँ कि मेरा जाता ही है उतना, एंड देन योर रिकवरी इज बेटर व्हेन योर एचआरवी इज गुड. सो एचआरवी पे बहुत चीजें होती है, यू इफ यू हैव डिप्रेशन वाला थिंग एंड एवरीथिंग, सो योर एचआरवी विल बी लो. इफ यू आर स्ट्रेस, देन योर एचआरवी विल बी लो. ठीक है, सो ये सारे स्ट्रेस टेस्ट जब होते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका पॉजिटिव
एनवायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को कोई ज्यादा Definitely. स्ट्रेस नहीं, सो माई चेक इज ऑलवेज गुड। सो ये सारी चीजें होती है, बट इट गिव्स यू डेटा अकॉर्डिंग टू योर ऑल द थिंग्स, ठीक है। अगर इफ माई बॉडी टेम्परेचर इज 3 or 4 degree higher on one night, so that recovery will be bit low. This will show me some indication कि you are not properly recovered, ठीक है। If my resting heart rate usually is 36, but after doing DC immediately my resting heart rate will be 52, 53 or maybe 48, 49, ठीक है, because my body is recovering. So whoop knows कि बाबा कल इतना बड़ा effort हुआ है, then this is the recovery will come 1%. So that is something which you will take a rest and do all the things. If sometimes, okay, so आज मैं 2 घंटे सोया, मेरा रिकवरी आया 12-13%, which is okay because usually I sleep for 8-9 hours, then उतना ये होएगा, so उसके हिसाब से, but at the end you have to give credit to your body feel, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन द ऑल दीज डेटाज टोटली, ठीक है। अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरे को सच में ठीक नहीं लग रहा है, एंड इफ योर वूप इज शोइंग 98% ऑफ रिकवरी, आई विल नॉट डू एनीथिंग बिकॉज बराबर. आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। सो मे बी ऐसे हो सकता है कि जब तक डेटा आया था तब तक बॉडी ठीक था, बट उठने के बाद अचानक से सडनली कुछ तो हो गया जिससे आपका रिकवरी डाउन है। ओके, सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर प्रेजेंट बॉडी फील, Feeling. नॉट द रात का कितना रिकवरी है उसके ऊपर। कभी कभी तुम Hmm. सो गए, सांप काटने के बाद भी आधा घंटा लगता है मरने के लिए। सो ऐसा नहीं कि तुम इमिडिएटली कुछ ये हो गया तो, but if your whoop says that you're not recovered, but you feel that again I am fully energetic today, I don't think कि कोई problem है या जो भी है, do your session and everything, but it has happened hardly any time कि हम दोनों agree नहीं कर रहे, ठीक है। Okay. मतलब once in a month or maybe once in 2 months कि जब भी मेरे को लगता है कि वूप रिकवरी ज्यादा देगा और मेरे को वैसा फील नहीं हो रहा है, और मे बी मेरे को Okay. नहीं फील हो रहा है लेकिन वूप ज्यादा दिखा बता रहा है रहा है. कि यू आर नॉट प्रॉपरली रिकवर्ड। So it is all data based thing, but I think Whoop is gold standard because every Olympian Hmm. uses it, every Yeah, Tour I've de France heard. rider, runners, triathletes, everyone uses it. So हार्डवेयर सबका सेम ही होता है, सब कुछ एक्यूरेसी वैसे है। गार्मिन विल गिव यू सेम एक्यूरेसी, एप्पल वॉच गिव यू सेम एक्यूरेसी, अल्ट्रा ह्यूमन का रीम विल गिव यू सेम एक्यूरेसी ऑन द हार्डवेयर थिंग, बट व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज डेटा, कि कितने लोगों का Hmm. डेटा इनके पास है, कौन से लोगों का डेटा इनके पास है। मतलब ओलंपियंस का डेटा होना, उसके ऊपर एनालिसिस करना, कितना स्ट्रेन बराबर. लेवल होता है, कितना ये होता है। वो हैज वेरी गुड थिंग ऑफ कैलकुलेटिंग स्ट्रेंथ लोड। ओके, इफ यू डू Okay. 1 hour का रनिंग, योर strain will be somewhere around 14, 15, okay? So maximum strain is 21 in Whoop, okay, which you never reach. Maximum you reach is like 20.9. 21 is like, I don't know, nobody reaches. That is like the Okay. upper limit. And 1 to 5 is like super easy to achieve. Okay, 5 to 8 is like bit hard, मतलब आप थोड़ा सा वॉक कर लो 100 meters, you will reach at 5 का strain, ठीक है। Okay. But if you run for 1 kilometer, then you will reach 5 to 8 easily. 18 to 13, you will have to run for like 1 hour or maybe 10 kilometers. फिर Okay. 13 के आगे then it gets difficult. मतलब अगर मैंने To 100 increase. किलोमीटर चलाया, मेरा strain will like 14, 15, 16. But to reach 19, I have to ride more 500 kilometers. Oh, ठीक है, सो okay. मोर इट Difficulty गोज keeps हायर, increasing. इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। सो उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, ज्यादा लोड आपका ये करेगा, तो उसके ऊपर इट गिव्स यू नेक्स्ट डे का रिकवरी, दैट हाउ मच यू हैव टू स्लीप। अगर आप Okay. सोने गए तो कितने टाइम में आपका रिकवरी होएगा। इट हैज ऑल द डेटा नाउ, आई बीन यूजिंग दिस लाइक मोर देन 3 years। सो इट नोज एवरीथिंग कि अगर मैं 8 घंटा सोता हूँ तो 8 घंटे में मेरा 1.5 घंटे का रेम होगा, 2 घंटे का डीप स्लीप होगा, 3 घंटे का लाइट स्लीप Hmm. होगा। सो इट गिव्स मी इंडिकेशन की बात। देखो अगर 85% रिकवर करना है तो यू हैव टू बी इन बेड फॉर लाइक 10 hours, अदरवाइज यू आर Okay. नॉट गोइंग टू मेक 85 hours। बट वैसे भी होता है कि कभी कभी कम स्लीप में भी आपका रिकवरी गोज हायर बिकॉज ऑफ द मे बी एंड लॉट ऑफ थिंग्स मैटर, योर रूम टेम्परेचर, योर पिलो, Yeah. योर बेड, योर साइड वेयर यू स्लीप, रोज कौन से पिलोज यूज करते हो, एसी का टेम्परेचर कितना है,
सोने के पहले क्या डिफरेंट किया था, कपड़े कौन से पहने हैं, ये सारी चीजें कितने बहुत बजे खाना इंपॉर्टेंट खाया? है, जो या ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्क पड़ता है, और ये सारी चीजें बहुत ग्रेजुअली सीखते हो। अनलेस एंड अनटिल यू वोंट ऑब्जर्व, यू वोंट लर्न। करेक्ट। ग्रेट। जस्ट एक लास्ट सेक्शन है या जिसमें आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय पीपल, लाइक स्मॉल स्मॉल या क्वेश्चंस है दैट व्हाट आर द अपकमिंग नेक्स्ट रेस व्हिच यू आर प्लानिंग? या आई एम अपकमिंग गेसिंग, रेस व्हिच आई एम I प्लानिंग have एट। one guess, but you या can tell me. या टेल मी। I think Great Himalayan Extreme 900. No, No? I haven't decided yet. Okay, so because I have done Himalayan already, and I'm going for training in April. But I don't know if even 2 week पहले भी अगर मेरे को लगा कि मेरे को करना है, I might sign up. अच्छा. So yeah, but yeah, I'm currently I'm planning for Dunes 1400. So Oh, December. so that is the this thing, and of course I'm planning for Borrego 6, 12, 24. So Okay. yeah, these events will be on the line. DC, I don't know. DC, पता नहीं, Borrego गया तो then I'll get only 2 weeks. So I don't see. So in April, you're going to Leh, you're saying, for training. Yeah. Very nice. Yeah. So Danesh Dande is asking, how many crew members were there? You told there were 10. Okay. Yeah. For the Romantika race. Yeah. Then Yeah. For Soumya Veda is asking that if you're riding solo for long rides, do you carry like any safety sharp object or anything with you? I don't think so. You ride solo. You mostly ride with crew yeah, I only. ride solo. Okay, but I never experienced something in which someone will come and शो Okay. यू सम थ्रेट। ओके, साइकिलिस्ट का इजी है, बाइक पे जाते जाते धक्का दे तो वो गिर जाएगा क्या? उसको क्या शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब क्या करेंगे? नहीं, लाइक वी for आर our द मोस्ट, safety. या यू नो, एक बार तू गिरेगा क्या सेफ्टी करेगा, मतलब एक बार तू गिर Yeah, गया maybe. तो देन व्हाट यू विल डू? तेरे को उठ के वो क्लीट्स मार निकालने दो. में तेरे को 4 थप्पड़ मार के कौन चला जाएगा? यू डोंट नो। सो या कुछ फर्क नहीं Good. पड़ता है मैक्सिमम, वो उल्टा गिरने के बाद खुद को ही लग जाएगा। सो डोंट डू Okay. एनीथिंग लाइक दैट कि वो शार्प ऑब्जेक्ट है। एट द एंड यू हैव योर टूल, ठीक है? टूल में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है, इफ यू वांट टू यूज दैट यू यूज इट, बट वो निकालना उसको करना वगैरह, बट वो आई हैव सैडल तक गुड से मसल्स, निकालना सो पहले. या सो आई हैव गुड मसल्स, सो आई डोंट नीड एनी शार्प Oh, टूल्स। so go to gym. या Okay. गो टू जिम। Next, next question is Mandar Marathi is asking, who is your inspiration? Yeah. Okay. So see, inspiration wise, you have to keep, like, I keep a lot of people as my inspiration. Okay. I have a in-house, my sister is there, my father is there. Yes. Okay. My mom is there. Okay. All are good in different ways. Okay. Uh, uh, then if racing background or something, if you see, I love Lewis Hamilton, then Strasser. Okay, because these guys are like epitome of their own categories and everything. Then, Hmm. like, every day you see someone which is good in something, and then you feel like अरे ये बंदा क्या है, मतलब if you see Ratan Tata, if you see Shahrukh Khan, okay, वो बंदे का Correct. humor and that wittiness, okay, that attitude, so आपको कुछ ना कुछ, सबसे कुछ ना कुछ अच्छा लगता ही है। So they're like सो मेनी इंस्पिरेशंस। अगर मैं कोई बच्चा भी देखता हूँ एक अच्छा, जो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, या जो बहुत ही सिंसियर है और समथिंग है, लेकिन समथिंग कि आप उसमें से कुछ ना कुछ इंस्पायर होके ले सकते हो कि बाबा ठीक है, मेरे को इसमें ये चीज बहुत अच्छी लगी। इफ यू सी सतीश शर्मा, हु इज Yes. माय फ्रेंड और माय क्रू में है, जो PRM. भी है, वो बंदे का एक बहुत अच्छा Hmm. चीज है दैट ही केयर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर कोई गिर गया रास्ते पे, हमारा पहला एक्सप्रेशन होगा कि यार गिर गया, और हंसी हंसी आ जाता है। दैट इज ह्यूमन नेचर। अगर कोई फनी तरीके से गिरता है तो ठीक है, मतलब चलते चलते फिसल के गिर गया, उसको लगा वगा नहीं है, लेकिन दैट गाय रन्स टू पिक हिम अप, उसको दिखता है कि उसके फेस पे लगा है कि यार, मतलब यार सतीश को बुरा लगा ये गिरा, तो देन दैट केयरिंग वाला थिंग है। सो ये सारी चीजें आप कहीं कहीं से भी उठा सकते हो, मतलब। सो आई हैव मेनी इंस्पिरेशंस। Nice, but I see that from each and every person we can take something या also good, and that is इवन itself समटाइम्स helps us आई somewhere. टेक्स, yeah, even sometimes you can take inspiration from yourself. Okay, in past days, if you do Correct. something good,
एंड नाउ इफ यू आर टोटली बिहेविंग अपोजिट टू इट, तो देन आपको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन होना इम्पोर्टेंट है कि यार ये चीज मेरे में नहीं था, ये अभी अभी डेवलप हो रहा है, सो दिस इज नॉट गुड। Hmm. कभी कभी लोग चिड़चिड़े बन जाते हैं एज जैसे जैसे बढ़ता है, जो कि पहले बहुत काम होते हैं। सो उनको वो, मतलब यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर सेल्फ की लुक एट योर How? सुपीरियर और बेटर वर्जन, कि तुम उस चीज में पहले कैसे बिहेव करते थे या अभी कैसे करते हो। के लिए मेरे को अभी Hmm. लगता है कि आई एम बीइंग मे बी थोड़ा और भी, मतलब आई एम इम्प्रूविंग इन एवरी वेज। आई जस्ट हैव टू कंट्रोल ऑन माय माउथ, कि मैं जो मन में आता है वो बक देता हूँ, बट आई डोंट नो, मतलब मेरा है वो नेचर, सो है, मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट आई एम रूड और समथिंग, बट आई एम pretty straightforward. If I feel कि बाबा ये बराबर है तो ये बराबर है, ये नहीं है तो नहीं है। I can't put that Yeah. मस्का एंड थोड़ा सा मक्खन लगा एंड थोड़ा सा मीठा कोटिंग करके दो, कुछ नहीं। If I'm good with someone, उनके सामने तो मैं वैसा ही हूँ उनके पीछे भी। So that's how it is, and I think that is a good quality. But yeah, किसी किसी को थोड़ा बुरा लग जाता है। So but yeah, जितना कम लोगों को हर्ट करो उतना ज्यादा बेटर है। But yeah, you can take inspiration from anything. Very nice. So on that note, we'll end the podcast here. Yeah. So thank you so much, Kabir bhai, Thank you for so much, sharing your boss. Yeah, experience. yeah. So for all of you, you can also follow him on social media, and he has a page called as All About Ultracycling, right? Uh, Pechavar, you have not put a lot of content recently, right? yeah, I know, I know. But I have to anyway, start putting something. Yeah. definitely you can follow, you can watch a lot of other podcasts of his where you can learn about his story, his past experiences, and a lot to learn from him. So yeah, thank you so much. Yeah. Chalo. Thank you, boss. Okay, Chalo. no See problem. you. Bye bye. So, did you enjoy the podcast? Did you find it useful? If yes, then do share it with your cycling friends, family, in your close groups, and give this video a thumbs up. Let me know your thoughts in the comments below if you have any more questions you want me to ask him. And finally, let me know that if you do you want me to start a separate channel taking on clips from this podcast so that it will be easier for you to consume for specific topics. Till then, I'll see you in next cycling video.